Imagine a world where written words come to life through speech, seamless and clear. जहां आप हजारों खर्च करते हैं अपने वर्ड्स को स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए, वहीं आज आप और मैं मिलके अपने प्रोजेक्ट में एक ऐसा ऐप डिजाइन करेंगे जो आपके लिए ये काम करेगा मुफ्त में, और द ओनली अमाउंट यू हैव टू पे फॉर इट इज टू गिव योर टाइम एंड एफर्ट इनटू लर्निंग इट। तो क्या आप शब्दों को एक नई जुबान देने के लिए तैयार हैं? तो फिर चलिए इस आइडिया को रियलिटी में बदलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा मैंने क्या बनाया है जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो ये एक टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर वेब ऐप है जो मैंने रेंडर पे डिप्लॉय कर रखा है। इसमें मैं कोई भी टेक्स्ट कॉपी कर सकता हूँ और उसको किसी भी स्पीच में कन्वर्ट कर सकता हूँ जहां मेरे पास वॉइस ऑप्शंस हैं, इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन एक्सेट्रा। सबसे पहले मैं चेक करूंगा इंग्लिश। तो इफ आई जस्ट क्लिक ऑन कन्वर्ट टू स्पीच, industry oriented courses in software development and data science to land the tech job of your dreams. ठीक है, तो ये था इंग्लिश। लेट्स ऑल्सो चेक जर्मन। तो आई हैव अ ट्रांसलेशन ऑफ जर्मन हियर। आई विल जस्ट go to my web app, paste the German, choose German, and for speed we'll just click on normal, convert it to speech. KI-gestützte, branchenorientierte Kurse in Softwareentwicklung und Datenwissenschaft, um den Technologiejob Ihrer Träume zu bekommen. तो अगर आप जर्मन नहीं भी जानते हैं बट उसके लिए कुछ स्पीच जनरेट करना चाहते हैं तो ऐसा वेब ऐप आप भी बना सकते हैं, और मैं आपको सिखाऊंगा अगले 10 मिनट। तो इसके लिए सबसे पहले आप चैट जीपीटी पे जाओ। तो आपको चेक करना है कि इन पाइथन हाउ कैन आई जनरेट स्पीच फ्रॉम टेक्स्ट। तो ये आपको दो ऑप्शन देगा, GTTS और PTTS X3। तो यहाँ पे आप जो भी वो आपको ऑप्शन दे रहा है उनको चूज करके चेक करोगे या डिबग करोगे कि वो सैम्पल्स और स्क्रिप्ट्स आपके लिए काम कर रहे हैं कि नहीं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो मेरे पास बेसिक स्क्रिप्ट आ गया टेक्स्ट टू स्पीच का जिसमें GTTS है। तो हम लोग जाते हैं अपने पाइथन पे जहाँ पे मैं एक फ्लास्क एप्लीकेशन बनाने वाला हूँ, इसलिए मेरी ऐप का और पहली फाइल का नाम है app.py। बट यहाँ पे मैं चेक करूंगा कि मेरा टेक्स्ट जो मैं जनरेट कर रहा हूँ वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नाउ आई हैव टू ऑल्सो यूज अ प्लेबैक हियर। अभी मेरी स्क्रिप्ट में वो मेरे को एक MP3 फाइल दे रहा है जो मैं चला के देखूंगा, बट मुझे वो नहीं चाहिए। तो आई विल जस्ट टेल चैट जीपीटी टू मेक सम एडजस्टमेंट्स। तो आई विल जस्ट से आई वांट अ प्लेबैक इंस्टेड ऑफ डाउनलोडेबल ऑप्शन। तो नाउ इट विल अपडेट द स्क्रिप्ट फॉर मी, जिससे वो डाउनलोडेबल ऑप्शन की बजाय मेरे को नॉर्मली एक प्लेबैक ऑप्शन दे जहाँ पे मैं उसको चला के देख सकूँ कि वो मेरा जो स्क्रिप्ट मैंने चलाया है वो काम कर रहा है कि नहीं। तो ये तुम्हारा पहला स्टेप होगा, और यहाँ पे मेरे को दो चीज़ें या दो डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। सबसे पहला होगा मेरा GTTS। तो इसके लिए मैं एक सिंपल पिप इंस्टॉल कमांड डाल सकता हूँ, और PTTS के बाद मेरे को इंस्टॉल करना पड़ेगा पाई गेम। तो आई विल ऑल्सो इंस्टॉल पाई गेम। तो हमारी सारी डिपेंडेंसीज हो चुकी हैं। अब मुझे चेक करना है कि मेरा जो यहाँ पे स्क्रिप्ट है वो मेरे लिए टेक्स्ट टू स्पीच कर पा रहा है कि नहीं। तो हमारी स्क्रिप्ट में थोड़े से हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो हमारा स्क्रिप्ट है जिसमें हम लोग पूछने वाले हैं हेलो हाउ यू डूइंग। लेट्स जस्ट रन इट एंड सी इफ वी आर गेटिंग द टेक्स्ट कन्वर्टेड टू स्पीच और नॉट। Hello, how are you doing today? ठीक है, तो हमने पहला स्टेप पूरी वी हैव सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड द फर्स्ट स्टेप जहाँ पे हमने टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट किया है। अब हम काम करेंगे दूसरे स्टेप के बारे में, जब जहाँ हमें एक फ्लास्क एप्लीकेशन बनाना है जहाँ पे हम ये सारा UI बनाएं, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्ट करें, एक डाउनलोडेबल ऑप्शन दें, प्लेबैक स्पीड दें, और उसमें हम लोग डिफरेंट वॉइसेस भी यूज कर सकें। तो फिर से मैं वापस जाऊंगा अपने चैट जीपीटी पे। आई विल टेल चैट जीपीटी कि आई वांट टू क्रिएट अ वेब ऐप that converts text to speech, create a UI, or instead of web app we can tell the chat gpt to create a flask web app. It will convert the text to speech, create an option to choose from various language options, and playback speed, and give a playback
playback option for the generated voice, top it up with the downloadable option to download that particular speech. So right now only one dependency is left that I have to install. So I'll go back to my PyCharm and install Flask as well. All right, so that is also solved. Now it is giving me a directory that I have to create, which is I have to create two more directories, static and templates. This I'll tell you why we are creating this. First, let's create those directories, static and templates. So templates में we'll probably have to create one more file जो होगी हमारी index.html. तो हमारा UI कैसा दिखना चाहिए उसका ढांचा बनाने के लिए हमें HTML फाइल बनानी पड़ेगी. If you are familiar with full stack development, these things matter a lot. HTML, CSS, how you're creating the framework for your application, and then उसमें कौन कौन सी स्टाइल तुम्हें इंक्लूड करनी है उसमें CSS काम आएगा. तो स्टैटिक और टेम्पलेट्स index.html बनाने के लिए और हमारा CSS फाइल बनाने के लिए काम आता है. So I'll just create the index file, and in the static I'll also create one more file. Better yet, let's just go back to ChatGPT if it's asking for us to create that or not. So it has given us one Flask application ka script. It has language options which include English, Spanish, French, German, Italian, Portuguese and Dutch as well. I think इसमें हमें थोड़ा debugging support लगेगा because there are some options that we have not included, that ChatGPT has not included. And then we have created a simple, very simple looking app. With this, he has also given index.html file जो हम लोग अपने application में use करेंगे. So let's go back. We will update the app.py. No dependencies as such. Now we'll go to index.html. Copy this code and we will run this again. Now to run this, I will just run python app.py command. It will create a server for me. Let's go to that server and I can see that the text to speech app is created. It is telling me what the language has to be and then playback speech. Now let's say if I convert any text to speech, hello, how are you doing? We'll do that again. So this is our first level of debugging that we're doing. Let's say we want to convert this into English itself. Playback speed is going to be let's say 1.5, closer to 2, not exactly 2. Hello, how are you doing? Alright, so it is converting the text to speech, but our web page does not look exactly how we had seen in the beginning, that the app that I was showing you, and it has a download button as well. So we'll just add a little styling to this. So we'll go back to ChatGPT. अब यहाँ पे हम ChatGPT को बोलेंगे my web page does not look professional or minimalist. Add styling and create hyper realistic and interactive UI elements. So let's see what it comes with. Now here comes the CSS part. So where we'll probably have to create a style.css. So while the ChatGPT is generating, we will create a style.css file. All right. So now ChatGPT is done updating the CSS file. We'll go back to CSS, copy the code there, and it is also telling us to make a few adjustments to index.html. All right. Okay, so we'll go to index.html. We have updated it. Let's go back to our server. Hello, how are you doing? All right. So we'll probably have to run this again. Now, even now, we have to do some debugging because the style is not showing here. So I'll ask ChatGPT to debug this error. Why should I do all the, hard work for this? So I'll just tell ChatGPT my style sheet or my web app is not showing the style, and we'll probably go back to the directory also because I think
There we have to create static. In static we have to also create one more directory, which is css, and move our css file to static css. Now if we go back to our server, I think it will work perfectly fine. And this is how your text to speech converter looks like. This is what I was talking about. So you can leverage ChatGPT and create something like this in less than 10 minutes. And if I paste any text here, let's go to Google Translate, what I have shown you in the beginning, the text that we have copied from the Newton School web page, converted into Spanish. Let's go back here, go to Spanish, and see if it is converting it into Spanish or not. Cursos impulsados por IA y orientados a la industria sobre desarrollo de software y ciencia de datos para conseguir el trabajo tecnológico de sus sueños. Now I should translate it into what are the other options do we have in our web app? I have German as well. So I'll probably go for German. It's giving me this text. I'll copy it, put it into my web app. Now for the playback speed, let's go a little slow. Key gestures the branchenoriented. Alright, I think we have made gestures the branchenorientierte Kurse in Software Entwicklung und Datenwissenschaft. So I forgot to take German on that. Job ihrer Traum zu bekommen. Key gestützte. So this is exactly how a German would sound saying those words in German. Because I don't know German, I don't know what it actually means. But I have translated it. So the bot is actually telling AI-powered industry-oriented courses in software development and data science to land the tech job of your dreams. And this is how you create a web app using ChatGPT in 10 minutes.